Hello everyone, good morning. Welcome back to a new At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? और यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा इसको कर लेंगे हम फ्राई, जो भी हमने यहाँ पे चॉप करके रखा था, ताकि ये थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाए और इसमें से कच्चापन हट जाए। और ये अभी हल्का यहाँ पे पक गया है और इसमें हम डाल देंगे ये कॉर्न। इस तरीके से अच्छे से फ्राई हो गया है। आप नमक इसमें अपना स्वाद अनुसार डालें और मैं इसमें ऐड करूँगी मैगी मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो अभी चाट मसाला अवेलेबल नहीं है जो कि इसमें डलता है। चाय के बिना तो मज़ा ही अधूरा है दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो। तो मैंने चाय भी यहाँ पे बना लिया और देखिए स्वीट कॉर्न हो गए हैं यहाँ पे बनके रेडी। आप इंजॉय कर सकते हैं देख के और ये रेसिपी भी बना सकते हैं। तो चलिए हम भी फटाफट खा लेते हैं, देन आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी डिनर हो गया है डन और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, स्वीट कॉर्न रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।